Hello everyone, let's move on to the next numerical, number 15. So here it is given that inductance value is equal to 2 Henry. So L का value है 2 Henry and current is represented by a sine wave. So current का formula आपको पता है I naught sin omega t and उसका amplitude 0.25 एम्पियर है. अब ये पार्ट को समझो. Oscillations chapter में we use such kind of formula x is equal to a sin omega t. ये आपका एम्पलीट्यूड होता है. सो ये दो फॉर्मूला को जरा रिलेट करो एंड एम्पलीट्यूड हियर इज नथिंग बट आई नॉट. सो क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड का वैल्यू दिया है, मतलब आई नॉट का वैल्यू है 0.25. ओके, सो आई नॉट आई विल राइट एज 0.25 एम्पियर. फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है 60 हर्ट्ज and they have asked you to calculate the effective potential difference. So effective का मतलब RMS. E naught रहेगा तो peak value पूछा रहेगा. So here I write we are supposed to find the value of ERMS. Okay. Now which formula we are supposed to use? I hope you have referred lecture number 7 of this AC circuit. उसमें XL का formula हमने पढ़ा है, which is nothing but 2 pi FL. As well as Ohm's law, E is equal to IR. But inductor रहेगा तो resistance के बदले inductive reactance आएगा. Okay. So now what I'll do? I'll substitute maximum EMF as well as maximum current. ठीक है? या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इधर आप RMS EMF value as well as here you will substitute RMS current. तो जल्दी हो जाएगा, शॉर्टकट. So ERMS, IRMS का फॉर्मूला क्या है? It is I naught divided by root 2. XL का फॉर्मूला है 2 pi FL. Just put the values. I naught value is 0.25. Here we have 1.414 into 2 into 3.142. Frequency is 60 and the value of L is 2. So when you multiply all these things by log calculation or by directly, then you will get answer as 133.32 volt. Last answer may vary in some decimals, 1 or 2 digit, which is acceptable. Okay, first 3 digits will definitely match, whether you do it with log calculation or you do it directly. So let's proceed for the next numerical, number 14. Here you can observe that capacitance का value दिया हुआ है, microfarad में दिया है. So capital C is 15 microfarad, which will be converted into farad. 15 into 10 raised to minus 6. Then 220 वोल्ट को कनेक्ट किया हुआ है. सो मैंने आपको पहले ही बोला है ये वैल्यू आरएमएस वैल्यू होता है जो वोल्टेज दिया रहता है. सो ERMS इज 220 वोल्ट. फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया है 50 हर्ट्ज. व्हाट दे हैव आस्क्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस. सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस मींस XC. ओके, and current both RMS as well as peak. So IRMS as well as I peak, I naught. Okay. Next they have asked कि अगर frequency को करेंगे डबल तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का क्या होगा? क्या वो भी डबल होगा? और करंट का भी क्या होगा? क्या वो भी डबल होगा? 4 times whatever. Let's try to find out. So which formula we are going to use? I hope आपने लेक्चर नंबर 10 देख लिया है जिसमें मैंने कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सप्लेन किया था. इन दैट XC का फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है, इट इज 1/2 pi f इंस्टेड ऑफ L. यहां पर क्या आएगा? C. अब ये कैलकुलेशन बहुत लेंथी होने वाला है, सो आई जस्ट substitute the values and tell you the last answer. You can do it on yourself. You can do it by yourself with the help of log table. So 1/2 into 3.142 into 50 into 15 into 10 raised to minus 6
10 raised to minus 6 न्यूमरेटर में भी आप भेज सकते हो and then you can solve it. The answer that you will get for xc will be 212.1 ohm. This is reactance, but कहीं ना कहीं ये resistance का ही काम करता है. Okay, this last digit may vary with your answer, doesn't matter. First 3 digits should match. Let's go for the second part. अब हमको RMS करंट फाइंड करना है. So we know Ohm's law, E is equal to IR, but यहाँ रेजिस्टेंस के बदले क्या आएगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ओके, यहाँ पर भी RMS and इधर भी RMS सब्स्टिट्यूट करो. So that is how IRMS will have a formula ERMS divided by XC. So ERMS का value 220 and this we have got 212.1. So that is how when you solve this you will get IRMS value as 1.037 ampere. Okay, again I am saying you the same thing, last digit may vary. ठीक है, so अभी I naught peak value तो बहुत easy है, you know that formula IRMS into √2. So this and 1.414 multiply करोगे you will get your last answer as 1.466 ampere. Quite lengthy calculation. That's it for this video. Thank you.